नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। आइए हम अपना ब्यूटीफुल सा सेशन चालू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं आपका गेट PYQ 2018 का जो सेकंड पार्ट हमारा रिमेनिंग रह गया था आफ्टरनून सेशन का। ये रहा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन, फर्स्ट वन, फर्स्ट कम्स टू फर्स्ट सर। फीफो मॉडल हम फॉलो अप करते हैं। लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फॉर अ काउंटर क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन अराउंड अ यूनिट सर्कल C centered at origin. Cyclic integral C 1 upon 5z minus 4 3z is equal to a pi I. The value of a 2 by 5, 1 upon 2, 2 और 4 by 5 which is to be a true over here. तो कंटूर बना हुआ है। कंटूर के अंदर देखना है कि आपका जो है फंक्शन लाई कर रहे हैं कि नहीं, एंड देन आफ्टर दैट आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा नॉर्मली जो है क्लॉकवाइज काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज जो है सेंस दे रहा है। ओके, so here we have the circular body over here. The question number is to be a 26. Here we would draw here the body is to be over here. Put the now the equation is to be cyclic integral dz by 5z minus 4 is equal to a times of pi I. It is to be the equation over here. The points are to be minus 1 0, here 1 0. Therefore for the y direction minus 1 0 and minus 1 0 1 0 0 1, sorry. So we have to proceed it 1 upon 5 cyclic integral over the C 1 upon z minus 4 upon 5. Therefore the pole is to be as z is equal to 4 upon 5. So the cyclic integral over the 1 upon 5z minus 4 times of dz is equal to pi over e by 5, limit z tends to 4 by 5 z minus 4 by 5 upon z minus 4 by 5. Alright, now the a pi I value is equal to pi I upon 5 into 1. So the a value is equal to 2 upon 5. That is your answer, Agra. Absolutely terror over here, रेसिड्यू के थ्योरम से। नाउ मूविंग अपार्ट फॉर द नेक्स्ट वन, लेट x1 x2 बी अ टू इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विथ मीन्स 0.5 and 0.25 respectively. Then y is equal to minimum of x1 x2 is exponential distributed with mean 1 by 6, exponential distributed with mean 2, normally distributed with mean 3 by 4, normally distributed with mean 1 by 6. So shall we proceed it? Yes, we should. Now we have to take a blank page. Now here exponentially. So here function of x times of lambda.
कुछ जो है डिफाइन इस रेंज में है, लैम्डा ई की पावर लैम्डा टाइम्स एक्स एट 0 फॉर x इज मोर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 0 वैल्यू के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट x लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x dx. Now whose value is to be lambda minus x e power minus lambda x upon lambda 0 to infinity plus 1 upon lambda 0 to infinity e power minus lambda x dx. So the value is to be lambda 0 1 by lambda 0 plus 1 upon lambda. So expectation x is equal to 1 upon lambda. The value of mean x1 x2 is equal to 1 upon lambda 1 plus lambda 2. Lambda 1 is equal to expectation of x1. 1 upon 0.5 is equal to 2 and lambda 2 is equal to 1 upon expectation of 2. 1 upon 0.25 is equal to 4. Okay, now further मीन ऑफ मीन की जो है मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए x1 x2 तो 2 प्लस 4 1 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू 4 राइट. तो हेयर जो आपका जस्टिफाई होगा exponentially distributed with mean of 1 upon 6. Move along for the next question over here. For the position vector r is equal to xi plus yj plus zk. Norm of the vector can be defined as vector r mod of root over x square y square z square. Given the function phi, logarithmic of mod of r is gradient of del phi is. इसका तो हमें जनरली फॉर्मूला याद ही होता है वेक्टर r अपॉन mod of vector r. So it is the c value. Justify है ना, ये फॉर्मूले से ही हो जाता है. Now 29th one. In a rigid body, क्या बोल रहा है, in a rigid body in a plane motion point r is accelerating with respect to point p at 10 angle of 180 degree 10 meter per second square. If the instantaneous acceleration of point q is 0, acceleration in meter per second square for the point r is to 16 12 20 दिया हुआ है, x y z दिया हुआ है. On that contrary note, how to we have to fetch that gap. चलिए देखते हैं. So here have to move around on this node 1. 233 225 217 या कि फिर 217 8 एंगल. हमको जो है पी क्यू आर बॉडी डिफाइन है, देन 12 एंगल ऑफ थीटा 20 इस तरह से. तो एक्सेलरेशन ऑफ आर पी इक्वल टू acceleration of r and p. Now acceleration of rp is equal to rp multiplied with omega का square. It is 10.
omega square multiply with 10. So the omega value is to be 1 upon square root of 2. AR is equal to R times Q omega square 16 into 1 upon square root of the whole square, which is to be 8 meter per second. From the trigonometry side, 12 by 2, so the theta value is equal to sine inverse of 3 upon 5. The value must be here. After this 3 upon 5 का वैल्यू 37 डिग्री, हमें ट्रिपलेट से पता है, और 180 प्लस 37 217 डिग्री होता है। एक्सेलरेशन ऑफ आर जो रिप्रेजेंट होगा 8 एंड 17 डिग्री। डील। सो ऑप्शन नंबर इट्स अ डी, Delhi. Okay, next question we have a rigid rod of length 1 meter is resisting at an angle theta is equal to 45 degree as shown in the figure, and P is dragged with a velocity 5 meter per second to the right at an instant as shown. Magnitude of velocity V in meter per second of point Q as it moves along the wall without a losing contact is। ओके, बॉडी दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है तो देखते हैं। ये 5 मीटर पर सेकेंड पॉइंट P से दिया हुआ है, एंड वेलोसिटी ओवर द V is to be here is PQ। चलो इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये आई सेंटर पॉइंट O पे में एंगल नॉर्मली 45 डिग्री है, तो P इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ OQ इज इक्वल टू 1 cos of 45 1 upon square root of dp r times of omega p into omega। So 5 is equal to 1 upon root omega value, and dq is equal to oq multiplied with omega 1 upon square root of omega। 5 is equal to dq वैल्यू, तो ये आपका आंसर होगा जो कि मीटर पर सेकेंड में डिफाइन होगा फाइनली। Now, next question we have a bar of circular cross section is clamped at an end P and Q as shown in the figure. Torsion moment 150 Newton meter is applied at a distance of 100 millimeter from end point P. Torsional reactions TP and TQ is in Newton meter at the end P and Q respectively are। ये shaft दी हुई है, सेंटर में आपका जो है T दिख रहा है एंड Q आपका एट द लास्ट पोजीशन। यहाँ पे बैरिंग से सपोर्ट किया होगा, सेंट्रल में तभी है। तो आपको बताना है कि भैया P और Q पे कितना टॉर्क लग रहा है। ओके, सेंटर में T है, सेंटर में T है। टॉर्शनल इक्वेशन से देखेंगे टोटल टॉर्क कितना है, TP प्लस इज इक्वल टू 150 150 75 दूनी 150 100 150 120 30 150 सभी है ऑप्शन में भैया। तो आपका ट्विस्टिंग ऑफ द रॉड, तो हेयर ट्विस्टिंग ऑफ द रॉड आपको दिखेगी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। पैरेलल कनेक्शन है। देखो भैया, पैरेलल और सीरीज का बहुत सिंपल सा पॉइंट होता है। पैरेलल ना किन्हीं दो पॉइंट से कोई कितने भी मल्टीपल कनेक्शन जा सकते, तो दो पॉइंट के बीच में पूरा कनेक्शन फिक्स होता है, और सीरीज में आपके जो है पॉइंट की निश्चितताएं नहीं रहती। तो हेयर द वैल्यू ऑफ
TL by GJ. So here TP लेंथ पे डिपेंड करेगा अपॉन GJ, तो सेम ही रहेगा क्योंकि मटेरियल ही नहीं चेंज हुआ है, एंड TQ इंटू 200 बाई D टाइम्स ऑफ J। तो यहाँ से रिलेशनशिप TP इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ TQ, जो आपका जस्टिफाई करेगा कि इक्वेशन में रखने पे 3 टाइम्स ऑफ TQ इज इक्वल टू 150, TQ की वैल्यू 50 एंड TP इज इक्वल टू 100, 150. It is the option C. Charlie is your right choice for this. Now, next question we have. In a cam and follower, the follower rises by h as the cam rotates by delta radian at constant angular velocity omega radian per second. Follower is uniformly accelerating during the first half of the rise period, and it is uniformly deaccelerating in the latter half of the rise period. Assuming that the magnitudes of the acceleration and deceleration are same, maximum velocity of the follower is 4h omega by delta h omega, 2h omega by delta and 2h omega. So here how to deal with it. तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, आपका जो है डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, वेरिएबल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मूव अपार्ट. सो हियर अकॉर्डिंग टू दैट एक्सेलरेशन हो जाएगा 4h ओमेगा स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी h ओमेगा बाय delta or h. So here according to that we have the correct option for the case of maximum velocity. Acceleration and deceleration is the same. The maximum velocity कितना है 2h omega by del. Charlie. Next question. A bimetallic cylindrical bar cross-sectional area 1 meter square is to be made by bonding steel. Young's modulus 210 gigapascal, aluminium Young's modulus 70 gigapascal shown in the figure, and in tensile axial strain of magnitude 10 raised to power minus 6 in steel bar, and compressive axial strain of magnitude 10 raised to power minus 6 in the aluminium bar. Magnitude of required force P kilonewton in along the indicated direction is to be L by 2. आपका लेंथ दिया हुआ है, स्टील और एल्यूमिनियम का केस दिया हुआ है, परफेक्टली बॉन्डली इंटरफेस दिया हुआ है. ओके तो आपका जो है कनेक्शन कुछ इस तरीके से क्लैम्प्ड एंड दिया. चलिए देखते हैं. बहुत आपने ग्रेस्पिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट लगाते हैं. बार जो है रेक्टेंगुलर, इस तरीके से L by 2 L upon. Okay, steel load P on that node. So strain is equal to by E, right, and PS by ASES is equal to aluminium, the second half of the body. So PS is equal to 10 Pascal, aluminium is equal to 70 gigapascal, right? Easy. So the value of PS by 10, aluminium is to be 70. PS is times of aluminium power minus 6. स्टील का हो जाना है स्टील 2 PS is
PS minus 6 10 10 raised to power 9, सो 10 किलो न्यूटन। एल्यूमिनियम का हो जाएगा 70 टन, राइट। एलिवेशन इज इक्वल 10 प्लस 70 फिर 0 किलो न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी is your right choice for that. Now we have the next question. Airflow at a rate of 1.5 meter cube per second through a horizontal pipe, gradually reducing cross section as shown in figure. The two cross section of pipe have a diameter of 400 and 200 millimeter. Take the air density as 1.2 kilogram per meter cube, assuming in viscous incompressible flow. Change of pressure P2 by P1 in kilopascal between section 1 and there is to be a airflow over a side type of field. यहाँ पे सेक्शन 1 दिया हुआ है एंड तो हमें जैसे ही दो सेक्शन दिखते हैं तो क्या फीलिंग आती है, ग्रेजुअली आपका रिड्यूस कर रहा है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो बर्नौली लगाएंगे। तो बिटवीन द टू पॉइंट्स वी हैव टू फॉलोड अप बाय आर बर्नौली इक्वेशन। 1 एंड के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। तो हियर P1 by rho g V1 square by 2c plus Z1 is equal to P2 by rho g square by g plus Z2 plus head loss। यहाँ पे हेड लॉस 0 है, डेंसिटी कांस्टेंट है एंड इनकम्प्रेसिबल, सो P2 1 by rho g square by g 2 square by rho g, the value minus 1 by 2 1 square minus V2 square 1.5 meter cube per second A1 V1 A2 V2 1.5 meter per second square, right? Here T1 value equal to T1 is pi upon 0 the whole square 4 pi upon 100 40 that is equal to pi by, so our genuine value which we have to concern upon this P2 minus 1.52 so pi first one so upon pi second, so the value is to 1.2 kilo pascal. A. Now we have the question number 35. The problem of maximizing z is equal to x1 minus x2 subjected to a constraint x1 plus x2 less than is equal to 10, x1 and x2 values to be a 0 and 5. So there is a no one single solution, two solution, more than two solution, कुछ नहीं। LPP में हम क्या करते हैं, ग्राफ बना
ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसे देख के आपको क्या फील होता है बताइए। ये there is to followed up single solution, right? We have to move for our next journey. Here it is to be asked over here, given that ordinary differential equation del square y by dx square plus dy by dx minus 6y is equal to 0, y is equal to 0, dy by dx is equal to 1. Value of y1 is equal to correct up to a decimal. This is to be asked over here. अगर मैं वैल्यू ओरिजिन पे रखता हूँ, आपकी इक्वेशन जो है 005055 एंड 010, नाउ ये डिफरेंशियल इक्वेशन लगा के ही आपको समझ में, चलिए फॉलो अप करते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल, वाई की वैल्यू 0 पे 0 दे रहा है वैल्यू, कंडीशन है ये गिवन। डी वाई बाई डी एक्स 0 पे 1, तो y1 की वैल्यू कैलकुलेट करके बता। इक्वेशन का प्रारूप कुछ इस तरह से दिखता है, डी स्क्वायर प्लस डी वाई माइनस 6y इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस m माइनस 2 एंड m प्लस का नाउ यहाँ से yx की जो इक्वेशन प्राप्त होती है डिफरेंशियल, c1 e की पावर माइनस 3x प्लस c2 e की पावर पर दी ये। तो वैल्यूज पुट ऑन करना चालू करो, तो यहाँ से सिंपली आपको c1 इज इक्वल टू नो जाता है माइनस का 1/5, c2 इज इक्वल टू 1/5, बाउंड्री कंडीशन पुट ऑन करना, इक्वेशन मिलती है -1/5 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस 3x प्लस 1/5 e की पावर एंड
the one value is equal to minus 1 upon 5 e की power 3 into 1, 1 upon 5 e की power to 1, value is to be 1.47. So the y1 value is it to 1.47 is your final answer. आसान था ना? देखो पढ़ने वाले के लिए ही आसान होता है चीजें। नाउ 37th नंबर क्या बोलना चाह रहा है? thin a thin walled cylindrical can with a rigid end caps has a mean radius 100 millimeter and a wall thickness of 5 millimeter. The can is pressurized and additional tensile stress of 50 megapascal is imposed along the axial direction shown in the figure. Assume the state of stress in wall is uniform along its length. Magnitude of axial and circumferential component of stress in the can are equal. Pressure inside the can is correct up to 2 decimal places तक हमको आंसर देना है। ठीक है, तो बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल है, तो हुप स्ट्रेस तो आनी ही है और आपकी लॉन्गिट्यूड भी आनी है, तो वही तो आपको बताना है। तो ऑन दैट contrast give up on that. So here cylindrical body में hoop stress PD by times of thickness, रेडियस के टर्म में PR by T and the longitudinal stress is equal to PD by 4T PR by 2T वैल्यू के बराबर। Right, on that have the radius of 100 millimeter as 5 PR by 50 minus PR by T times of PR by value is 50 R 5 50. So the value of pressure 5 megapascal is to be achieved. Absolutely correct option. 1 plus here, so the pressure value is 1.67. Easy, चलिए 1.67 भी आएगी और एक नॉर्मल वैल्यू P इंटू 100 by 5 is equal to pressure value 5 मेगापास्कल। कंडीशन कौन सा है इसमें? सर्कमफ्रेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस, मतलब कि हमको कौन सी वैल्यू? सर्कमफेरेंशियल वाली। सर्कमफेरेंशियल वाली भी ये दो वैल्यूज आ रही है ना,
तो हमको जो है सरकमफेरेंशियल वाली बतानी है। तो हूप होती है ना कि लॉन्गिट्यूड, पी आर बाई टी, इट इज टू बी करेक्ट ऑप्शन इज टू बी 5 मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bar is subjected to a combination of a steady load 60 kilonewton and fluctuating between -10 kilonewton and 90 kilonewton. Corrected endurance limit of the bar is 150 megapascal. Yield strength of material is 480 megapascal and the ultimate strength of the material is 600 megapascal. Bar cross section is required with a side A. Factor of safety is 2. Value of A according to the modified Goodman's criteria. अच्छा भैया, तो यहाँ पे लोड वेरिंग है 90 और -10, है ना, 90 और -10, और एरिया ही देखना है। मॉडिफाइड गुडमैन का फॉर्मूला होता है आपका ए बाई ई एम बाई यूल अल्टीमेट 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ए 50 अपॉन 150 ए 100 बाई 600 ए equal to 1/2 multiplied with 1000. So the area value is to be calculated 1000 meter square. यहाँ है आपका it is to be cross section square बोल रहा है। अब a स्क्वायर के बराबर 1000 है, a की वैल्यू 31.62 मीटर हमें अचीव हो, करेक्ट है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। A force of 100 Newton is applied to the center of circular disc, mass 10 kg, radius 1 meter, resting on a floor as shown in figure. Disc rolls without slipping on the floor. Linear acceleration of center of disc corrected to decimal place. Ask for. Okay, there is a condition. If R times alpha acceleration of center of mass. So here force radius I अल्फा के बराबर I की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई के बराबर। द केस ऑफ डिस्क 100 माइनस एफ सरफेस से फ्रिक्शन फोर्स, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, फोर्स नॉर्मली इज टू बी एक्चुअल 100 न्यूटन माइनस एफ एम अल्फा सेंटर ऑफ जस्ट टू एफ आर इक्वल टू आई अल्फा के बराबर आर स्क्वायर बाई अल्फा 100 एम ए एम बाई 2 एम ए of center of 61667 double, right, the final value. नेक्स्ट मूविंग पार्ट में हम आते हैं 40th फ्रिक्शनलेस सर्कुलर पिस्टन, एरिया 10 मीटर स्क्वायर -2 and the mass 100 kg sinks into a cylindrical container of same area filled with water of density 1000 kg per meter cube shown in figure. Container has a hole 10 raised to power -3 meter square at the bottom that is open to the atmosphere. Assuming there is no leakage from the edges of piston and consider water to be incompressible magnitude of piston velocity at the instant shown. तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। बॉडी यहाँ डाउन द ग्राउंड, पिस्टन दबाव डाल रहा है जो कि मास 100 का है और डिस्टेंस कितना ले रहा है वो 0.5 था। तो आपको बताना है फोर्सेस के बारे में। देखो पिस्टन की वेलोसिटी कहाँ तक पहुँच पाएगी। यहाँ पे स्टेंट क्या है, वॉल्यूम,
सो P1/T1 T2/T2 के बराबर। टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो है वो लगेगा 100, और आपका वेट पर यूनिट एरिया के बराबर P नॉट जो है प्लस W/A के बराबर। ये निकालते हैं तो 100 प्लस 25 10 100 P नॉट वैल्यू इज 125 कप्पा मीन 200 कप्पा किलो पास्कल। इनिशियली टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस। P initial by T1 P2 by T2, so 100 by 673 and 125 by value of T equal to 625 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में -2 से करेंगे 147.625 डिग्री। ब्लैंक पेज वहाँ पे इसे डिफाइन। फ्रिक्शनलेस सर्कुलर पिस्टन 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, मास 100 किलोग्राम, into a cylindrical container of same area filled with a water of 1000 kg per meter cube, shown in figure. Container has hole of 10⁻³ meter square at the bottom that is open as atmosphere, assuming there is no leakage water to be a incompressible. Magnitude of piston velocity instant पे बताना। चलिए आइए देखिए। यहाँ पे वेट राइट बाई रो एस वी स्क्वायर, that is from the Bernoulli. Here the value of atmospheric W by square, atmosphere square per unit of G equal to V2 square by 2 square 0.5. Here the consideration as 1 equal, and the continuity क्या बोलती है, कहीं पे स्टोर नहीं होना चाहिए। A1 V1 is equal to here 10 raised to power minus 10 raised to power minus V2, 10 times of V1 is equal to W by plus 0.5 point 10 V1
square minus v square upon 100 into 10 minus 10 10.5 99 v square by 20. So the final value is to be v1 is equal to 1.456 meters. That is your final answer. 1.456. Next question we have on the screen here. A 0.2 meter thick infinite black plate having a thermal conductivity of 0.96 watt per meter is exposed to a two infinite black surfaces 300 and 400 Kelvin shown in the figure. Steady state. Surface temperature of the plate facing the cold side is 350 Kelvin. Value of Stephen Boltzmann constant sigma 5.67 into 10 raised to power minus 8 watt per meter square Kelvin. Assuming one-dimensional heat conduction, the magnitude of heat flux through the plate in watt per meter square. करेक्ट अप टू 2 डेसिमल. अरेंजमेंट ये है 300 और 400. हमें पता है हीट टाइम्स ऑफ T1 माइनस रिडक्शन 5.67 10 raised to power minus 50 power 4 58 watt per square. Okay, इक्विवेलेंटली 400. कोल्ड साइड जो है आपका 350. So the magnitude 1.58 final answer. Next question. Air is held inside a non-insulated cylinder using a piston. Mass 25 kg. Area 100 centimeters. Stopper of negligible area shown in the figure. Initial pressure Pi. Temperature Ti. Oh. Air inside the cylinder are 200 kilopascal and 400 degrees Celsius respectively. Ambient pressure is P infinity. Temperature P infinity are 100 kilopascal and 27 degrees Celsius respectively. Temperature of air inside the cylinder in degrees Celsius at which piston will begin to move. Correct up to 2 decimal. Here initial pressure and temperature दिया हुआ है. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पिस्टन का एरिया मास 25 P infinity and T infinity. चलिए देखते हैं कैसे दिखेगा ये साइड. पिस्टन है रेक्टेंगुलर लैमिना पिस्टन से वेट एक्ट करे, एयर का प्रेशर एक्ट करे और ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगे.
right? So constant volume arrangement. So the P1 by T1 is equal to P2 by T2. So total downward force is equal to kilopascal s area. So equal to W by A upon A. The P naught value is 100 5G minus pi. The total वैल्यू हमको क्या मिलेगी 125 किलो पास्कल. प्रेशर गिवन है कितना पास्कल एंड टेम्परेचर चली 400. सो अपने इक्वेशन में लगाएंगे इक्वेशन Pi बाई Ti इक्वल टू बाई T2 here by 125 by 70 5 13 to 0.625 K, right? 47 point. Next question have on our screen is a standard vapor compression refrigeration cycle operating with temperature 35 degrees Celsius and a operating temperature minus 10 degrees. Develop water flooding. The pH diagram itself is at various stages. Isentropic efficiency of compressor 0.75, magnitude of compressor power in kilowatt. This is the here 5 degrees 10 degrees ये हुआ है 250 400 475 का रेंज है 650 400 का. ओके तो एवोपरेशन हो जाएगा हमारा डे 150 पावर इज 15 किलोवाट 10 10 mass of fuel per second. Pressure power flow rate of IF is of company 2 minus H1 power value 75 475 minus 400 द पावर कितना हमको गिवन होगा 10 किलो बरोबर राइट here now 44th ambient air is at pressure 100 kilopascal dVT 30 degrees 60% relative humidity saturation pressure of water is to be 30 degrees Celsius
and 4.2 Pascal specific humidity of air in ग्राम पर किलोग्राम ड्राई एयर डेसिमल कैसे सिस्टम बताना है देखते हैं। तो आपका जो है स्टार्टर कुछ तरीके से पैटर्न में लगेगा। पाई इज इक्वल टू पता होता है पीवी अपॉन एस वैल्यू ओवर 0.6 अपॉन 4.4 के बराबर। तो द पीवी वैल्यू इक्वल टू 0.54 तो पास इज इक्वल टू 0.22 अपॉन पी माइनस बराबर। So the value of omega 0.622 to 0.5 upon 100.5 162 ग्राम ग्राम ऑफ ड्राई एयर। बट यहाँ किलोग्राम में नहीं देना आंसर, ग्राम पर किलोग्राम में देना। 16.2 ग्राम per gram of dry air is your right choice for this. Here the question number 45. A test is conducted on 1/5 scale model of transistor by under a head of 2 meter, volumetric flow rate 1 meter cube per second at 450 rpm. Take the water density and the acceleration due to gravity as 1000 kg per meter cube and 10 meter per second square respectively. No losses both in model and prototype turbine. Power of full size turbine while working under a head of 30 meter is to be a 2 decimal is to be asked. हमें पता है पावर क्या होता है, सिंपली होता है। अगर मैं मॉडल और प्रोटोटाइप का जो है कंपेरिजन कर p बाय 5 इसका टाइप का p nm इसका है मॉडल का। दो द पावर ऑफ द 1000 10 into 0.02 मेगावाट आती है। हेड अपॉन 3 नॉट एन नॉट स्क्वायर मॉडल ऑन एम स्क्वायर है आपका स्पीड का स्क्वायर। स्पीड आती है 48 rpm। वैल्यू रखते हैं हमारे ऑप्शन में, तो बाई की पावर 5 48.56 का क्यूब इक्वल टू 0.0 पावर है 1/5 पावर 5 नॉट की पावर 5 इंटू 450 क्यूब। तो हमको पावर मिलती है 29.045 मेगावाट 0. Move along for the next question. The two stress in megapascal versus two strain relationship for a metal is given 1020 epsilon की पावर है 0.4 cross sectional area of start of test. Stress and strain value are equal to 100 millimeter square. Cross sectional area of the time of square rounded of the decimal places बतानी है। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करें संभव जो हो।
or not epsilon power the u side. Epsilon is n, epsilon log of final length to the is in, yes, log of final to the initial length. Final value is 1.491 and the volume remains the constant. So the value initially equal to final जो कि एंट्री करेगा और फाइनल तक रहेगा. So the AF value equal to 100 into Li by Lf. Here the AF value is equal to 100 by 1.9. So the AF is 67.05. 67. नेक्स्ट 47 में हम आ पढ़े a steel wire drawn from initial state diameter the initial 10 millimeter to a final diameter 7.5 millimeter, half cone of the type hybrid, coefficient of friction die and the wire 0.1, average of initial and final yield stress 350 megapascal, equation of drawing stress sigma given as y average 1 plus mu cot alpha 1 minus df by dh 2 mu cot for drawing stress required to carry out the operation in decimal places is to be asked. हमको है फॉर्मूला दिया हुआ है बस उसमें फिट आउट करना है और कुछ नहीं. 1 plus mu cot mu की वैल्यू 0.1 of अल्फा 5 डिग्री फाइनल टू द 7.5 और 10 कॉट आपको जो है 5 डिग्री कैल्शियम में डालोगे ना 316.4 मेगा पास्कल 1 इंच भी मेहनत नहीं कर बस आपको जो नजराना देना था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 following data correspond to an orthogonal turning of 100 millimeter diameter rod of lathe rig angle 15 degree, uncut chip thickness 0.5 millimeter, nominal chip thickness after the cut 1.5 mm. Here angle for this process is in the decimal places is to be r. तो हो गया r क्या होता है t upon tc के बराबर, choose value 0.5 by 1.5 0.10 over the 5 और cos alpha upon 1 minus r sin alpha. पाई कैलकुलेट करके आएगा हमारा 23.31 आसान फॉर्मूला गणित वाला क्वेश्चन है. नेक्स्ट 49th नंबर टेलर्स टू लाइफ equation is used to estimate the life of batch of identical high speed steel twist drill by drilling through hole at constant feed 20 millimeter thick mild steel plate. In test 1 a drill lasted 300 holes at 150 rpm while is in test 2 another drill lasted 200 at 300 rpm. Maximum number of holes that can be made by another drill from the above batch is
इन 200 RPM डेसिमल प्लेसेस तक बताना है। ओके, तो मेरे पास जाएगा की पावर एन V1 T1 की पावर एन टू पावर एन इंटू 300 की पावर एन इज इक्वल टू 300 गुणित तो पावर n, so the n value is equal to 1.709. all right, n की वैल्यू मिलेगी and p1 power n is equal to power n. so here the t3 value जो कैलकुलेट करके मिलेगी 53.52, इतने होल्स हम छेद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50th बोल रहा है भैया, for a sand casting a steel rectangular plate dimension 80 into 120 into 20 millimeter, a cylindrical riser has to be designed. Height of the riser is equal to its diameter. Total solidification time for the casting is 2 minutes. In Chevronn's law of estimation of the total solidification time, exponent is to be taken as 2. Solidification time for 3 minutes in the riser. Diameter of the riser is 2 decimal places तक बताना। हमको पता है solidification time times of बाई ए का होल स्क्वायर होता है, शो में हो जाएगा आपका 5/4 टी स्क्वायर, एच की जगह डी आएगा, 5/4 टी स्क्वायर। छोटे रसगुल्ले होते हैं और एक जो है हाइट होती है, पाई डी एच होता है। तो यहाँ से हम जो मिलता है T/6 एंड आपका मॉड्यूल ऑफ द कास्टिंग T20 अपॉन टाइम्स ऑफ 10 to 120 120 20 प्लस 20। इस तरीके से हमें वैल्यू मिल टाइम इज प्रोपोर्शनल टू का स्क्वायर के बराबर डिवाइड टू अपॉन 120/17 square, the value of t 51.87 millimeter. Correct. Now next question, the arc length of a directed graph projects are shown in figure. SPT length 1 to 2। तो यहाँ पे ना शॉर्टेस्ट पाथ, तो जो हमारा 1 से 2, 2 से 5 एंड 5 से 4, 4 से 6, 2 + 2 + 1 + 2 इक्वल टू 7। ये हो गया SPT शॉर्टेस्ट। और क्रिटिकल क्या हो जाएगा, 4 3 7 4 11 से भी ज़्यादा आ रहा है क्या, 11 से ज़्यादा, 4 2 6 7 4 11 नहीं, 2 4 2 6 2 8 पाथ भी आपका क्रिटिकल पाथ, लेकिन यहाँ क्रिटिकल पाथ नहीं पूछा हुआ है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये दिमाग की घंटी जलाने लायक, रेड मार्क करो इसको।
Next, a circular hole of 25 millimeter diameter and depth 20 millimeter is machined by a EDM electron cleaning. The material removal rate millimeter cube per minute is expressed as 4 into 10 raised to power 4 IT की power minus 1.25 where I is equal to 300. The melting point of the material is equal to plus of degrees Celsius. Time in minutes for machining this hole. Okay, so on that we have the condition I की वैल्यू दिया हुआ है 100 एम्पियर टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस MRR रिमूव 4 into 10 raised to power IT की पावर माइनस 1 पॉइंट तो ये ध्यान देना है डायरेक्टली डिग्री सेल्सियस में ले so here we have I and 1600 power minus 1 so the value is 37.401 millimeter cube per minute. Now the volume to be removed volume भी जाएगा is equal to pi by 4 e square h के बराबर so the value pi by 4 25 का square 20 so the value is to be 9817.47 millimeter cube so the time taken is equal to volume to be the removed by material removal rate. The T value is equal to 9817.47 upon 1374.01 7.14 इतना टाइम लगेगा भैया. Next question 53rd. A welding operation is being performed with voltage 30 volt and current 100 ampere. The cross-sectional area of the weld bed is 20 millimeter square. Workpiece and filler are titanium for which the specific energy of melting 14 joule per meter cube. Assuming the thermal efficiency of the welding process is 70%, welding speed in millimeter per second. 2 decimal places तक बता. So power is equal to consumption of the power is 0.713 100 watt whose value is equal to specific energy area and welding speed के बराबर 14 20 into V welding speed is equal to 7.5 millimeter. आसान था ना ये ऐसे तो बहुत करते हैं हम. Now here the second last question of the day 54. Polarized steam in the condenser of a thermal power plant is to be condensed at a temperature of 30 degrees Celsius. Cooling water which enters the tube of condenser 14 degrees Celsius and exit 22 degrees Celsius. Total surface area of the tube is to be 50 meter square. The overall heat transfer coefficient is 1000 watt per meter. Heat transfer the condenser is in decimal places तक बताना है भाइयों. देखते हैं कैसे करेंगे.
lm value of tau m tau 1 tau 2 logarithmic of theta. So the value of 30.1416 degree and the theta 2 value is 30 8 degree. टाइम क्या हो जाएगा 16 on log of 2 whose value is 11.54 and value of heat Q is equal to 1050 in 0.54, so the value 1.154 gigawatt. Next, 5. Vehicle powered by a sparking follows a standard Otto cycle gamma 1.4. The engine generates 70 while consuming 10.3 kilogram per hour of fuel, calorific value of 44,000 kilo. Compression ratio is task to R की वैल्यू ऑटो साइकिल. देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया जी. Here we have the formula of efficiency. The Otto cycle 1 minus r raised to power of gamma minus 1. here mass flow rate दिया हुआ है 10.3 किलोग्राम पर. calorific value 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम. पावर आउटपुट कितना दिया हुआ है 70 किलो. हीट इक्वल टू 10.3 on 3644,000 whose value is to becomes 125 kilo. Now efficiency is equal to 70 upon 125.9, value is to be 0.556. Alright, here value is 0.556. 1 minus 1 by r raised to power of gamma whose 7.61 the final value is to be comes. Right, the 7.61, that is your final answer. चलिए सेशन आपका कंप्लीट. क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. आपका अपना चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट. जीवन में हंसते रहिए और प्रगति के सफर पर सदैव अग्रसर. ईश्वर से हमारी थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे.